ओके, सो लास्ट 2 दिन में हमने क्या देखा था कि आपके कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था, व्हाट व्हाट इज द कोर्स ऑल अबाउट। एंड नेक्स्ट डे हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग के रिलेटेड व्हाट इज द बेसिक्स। हमने देखा था कि एक डे 1 पे फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। तो यू शुड नो फ्रंट एंड, दैट इज यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट। उसमें आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और आपका CSS बेस्ड लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क बोल दे से। अब यहाँ पर बूटस्ट्रैप सीख सकते हो और जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क्स में आपको रिएक्ट, ये आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आता है। ये दिस इज अ इंडिपेंडेंट ट्रैक दैट यू हैव टू गो थ्रू दिस। कम then in the backend development, or we call it as web application development or web services development or VPI development, this is the second part। और वहाँ आप सीखने वाले जावा, और जावा में आपके पास इतने सारे मॉड्यूल्स हैं। तो वहाँ पर आप कोर जावा सीखने वाले हो, एडवांस, फिर मिनी प्रोजेक्ट आपका एडवांस जावा पे, हाइबरनेट, फिर मिनी प्रोजेक्ट यूजिंग हाइबरनेट और स्प्रिंग फ्रेमवर्क। उसमें आप स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग JDBC, ORM, MVC, डेटा JPA, स्प्रिंग बूट, रेस्ट, और फिर उसके बाद आपके मिनी प्रोजेक्ट सारे एक मॉड्यूल पे, एंड देन देयर विल बी अ मेजर प्रोजेक्ट। डेटाबेसेस थर्ड आपको सीखना चाहिए, डेटाबेस रिलेशनल, नॉन रिलेशनल। रिलेशनल में आप MySQL सीखने वाले हो, नॉन रिलेशनल में यू कैन लर्न MongoDB also, दैट इज also इजी पार्ट टू गो थ्रू। तो डेटाबेस का यूज हम डेटा परमानेंटली डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। देन देयर आर सम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स एज अ डेवलपर यू शुड नो। so these are the tools which will make your developer life easy। मतलब यूजिंग दिस टूल्स यू विल इम्प्रूव योर डेवलपमेंट टाइम। मतलब आप बहुत सही तरीके से कोड लिख पाओगे, और भी बहुत सारा और भी चीज़ें हैं, कोड कोलैबोरेशन करना या डेवलपर के साथ, और कोई रिव्यू करना, कोड रिव्यू करना, कोड को क्वालिटी चेक करना, ये बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा टूल्स है, सो दैट यू गो थ्रू। देन क्लाउड सर्विसेज, आपको थोड़ा एटलीस्ट क्लाउड का बेसिक्स तो पता होना चाहिए कि क्लाउड होता क्या है, व्हाई डू वी नीड क्लाउड सर्विसेज। तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी उसे एग्जीक्यूट करने के लिए या चलाने के लिए आपको सर्वर चाहिए होंगे, डेटाबेसेस चाहिए होंगे, फिर और भी सर्विसेज चाहिए होंगी डेटा परमानेंटली स्टोर करने के लिए। सो यू कैन गो विद द वन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। तो Amazon वेब सर्विस इज अ गुड टू स्टार्ट, यू कैन गो थ्रू दैट। ये हमने डे 1 पे देखा था, और फिर आपको डे 2 पे मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था कि आपको क्या क्या आना चाहिए। तो बेसिक्स हमने बहुत सिंपल से स्टार्ट किया था कि कंप्यूटर होता क्या है। सो कंप्यूटर इज सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूजिंग विच वी कैन, क्या करते हैं हम, व्हाट डू वी डू विद द सॉफ्टवेयर दिस कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज करके वी कैन कंप्यूट, कंप्यूट मीन्स डू द कैलकुलेशंस, वी डू द कैलकुलेशंस, एंड इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर होता क्या है, सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ प्रोग्राम और set of multiple instructions given to the computer to perform certain task, right? Then program, it is a sub part of a software, it is nothing but a set of instructions given to the computer to perform certain task। हम प्रोग्राम क्यों लिखते हैं, प्रोग्राम लिखना मतलब आपको जो काम है मैन्युअली जो आप करते हो, इंस्टेड ऑफ यू डूइंग दैट मैन्युअली, यू कैन टेक हेल्प ऑफ कंप्यूटर टू परफॉर्म दैट टास्क। So you write instructions that this is how you complete the task. So that instructions are nothing but program. And the process of writing program, we call it as programming. So writing the instructions is the job of programmer. So programming language is the language in which we write the program. Instructions लिखने के लिए कोई ना कोई तो language चाहिए होगी. So for that we use programming language. Programmer or developer, it is a person who is going to write the program or who is going to develop the software. उसके बाद हमने थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम के बारे में देखा था कि क्या क्या नंबर सिस्टम्स होती है। बाइनरी में नंबर सिस्टम में यू विल हैव ओनली 2 डिजिट्स 0 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम विल हैव 8 डिजिट्स, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7। इन डेसिमल नंबर सिस्टम विल हैव 10 डिजिट्स, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और हेक्साडेसिमल में यू विल हैव 16, हेक्सा मींस 16 डिजिट्स यू विल हैव, 0 to 9 these are 10, and then A B C D E F these are 6, that is total 10 plus 6 is 16, right? अभी मैंने आपको बोला था कि टास्क क्या हो सकता है, टास्क कैन बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, कोई भी कर सकते हो आप, तो दैट कैन बी टास्क। अभी जो टास्क करना है आपको, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ तो इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कंप्यूटर को। तो इनिशियली पीपल यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन इन zeros and ones, that is binary language or we call it as machine language also, या
लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो वी कॉल इट इज। तो इसमें आप कोड लिखते थे जीरोज एंड वंस में एंड दैट वाज गिवन टू द कंप्यूटर, सो दैट वाज एग्जीक्यूटिव। ये फास्टेस्ट होता था, लेकिन इसमें बहुत डिफिकल्टीज होती कोड लिखना। एडवांटेजेस, इट इज वेरी फास्टर to execute and it is directly understood by the machine, so there is no conversion required at all. Disadvantages बहुत ज़्यादा है, आपको कोड लिखना, उसे रीड करना, मेंटेन करना, टेस्ट करना, स्केल करना, डीबग करना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है इसमें, क्योंकि कोड इज नॉट दैट मच रीडेबल। फिर डेवलपर को पता होना चाहिए कि पूरा हार्डवेयर का डिटेल्स, क्या आर्किटेक्चर हो सकता, क्या क्या हार्डवेयर है, सब कुछ उसको पता होगा, तभी वो कोड लिख पाएगा। और दूसरा एक बहुत हेडेक था कि छोटी चीज के लिए भी आपको बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ रहा था। इट वाज लॉट ऑफ एफर्ट्स, इट वाज लॉट ऑफ एफर्ट्स टू राइट दैट मच कोड। एडिशन के लिए भी आपको 1500 लाइन का कोड लिखना पड़ता। देन इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द डेवलपर टू राइट कोड। Because of these reasons, people introduce a language called as assembly language or middle level programming language. इसमें होता क्या था कि जो डेवलपर था इंग्लिश लाइक वर्ड्स में, नेमोनिक्स में कोड लिखता था, then that English like code used to get translated into zeros and ones and that will be understood by the machine. अब ये इसका बेनिफिट ये था कि you should be able to write code easily as compared to binary, test, maintain and code as compared to binary. But अभी भी इसमें क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी था डेवलपर को। यहाँ पर लॉट ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ कोड हो रहा था, दैट वाज, एंड अभी भी ये यहाँ पर मतलब एज कम्पेयर टू बाइनरी इट वाज गुड, बट स्टिल इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू स्केल, टेस्ट, डीबग और to add new features into that particular application. So it was very difficult. और छोटी चीज के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ रहा था। That's the reason people are covering more and more programming languages. तो उसके बाद हमारे पास आता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। इसे बोला जाता है हाई लेवल बिकॉज दीज आर गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच आर रिटन, लॉट ऑफ कोड इज रिटन इन प्लेन इंग्लिश वर्ड्स। So C was the first programming language, that is a lot of people call it is a father of programming languages also. So C was introduced in 1971 by Dennis Ritchie and C++ was introduced as an extension of C in 1978. And then Java was introduced in 1995 or 96 I think. फिर अभी C और C में कैसे काम करता है, what is the code you write, that is the developer written code is called as source code and that source code is saved in a file, let's say .c file. That file is given to the compiler and then that compiler will generate zeros and ones which are understood by the right. Now उसके बाद हमने देखा था कि different types of softwares, what are the different types of softwares we have. So software we have two types of softwares, system software and application software. System softwares are the softwares which are used or interacting with the hardware. Example, your operating system, device driver, they are interacting with the hardware. Then application software, these are the applications or softwares which are interacting with the operating system. They are not directly interacting with the operating system. They are interacting with the operating system. Then application softwares, we have different types again. Desktop, web applications or distributed or web services basically. डेस्कटॉप एप्लीकेशंस मतलब ये जैसे आपका लोकल पे चलता है, नोटपैड, कैलकुलेटर, दे डू नॉट नीड इंटरनेट, दे डू नॉट नीड इंटरनेट और ये सिंगल यूजर एप्लीकेशंस होता है, मतलब एक बार में एक ही यूजर उसे एक्सेस कर सकता है। अभी यूट्यूब कितने सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ, लेकिन आपके लेट्स से आपकी मशीन पर कोई नोटपैड है, हाउ मेनी पीपल कैन एक्सेस एट द सेम टाइम, ओनली वन पर्सन कैन एक्सेस। सिमिलरली वेब एप्लीकेशंस, web applications are the applications which are running on a remote server machine and which are accessed with the help of internet. So these applications can be accessed by multiple people at the same time. These are the applications which are accessed by multiple people at the same time. Example आपका Google Meet हो गया, is also one application. Then but वहाँ पर क्या हो रहा है, अभी भी सिंगल मशीन पर ही एप्लीकेशन चल रहा है। एप्लीकेशन इज मॉडरेट, इट इज नॉट दैट स्मॉल और इट इज नॉट दैट बिग, it is a moderate, a medium scale application which is running on a single machine. अभी आपके पास बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, बहुत बड़ा एप्लीकेशन, सो यू कैनॉट रन दैट ऑन अ सिंगल मशीन, सिंगल मशीन पर हम चला नहीं सकते। सो फॉर दैट रीजन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस और एंटरप्राइज एप्लीकेशन और वेब सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन. So these are the applications which are running on multiple server machines. राइट. अभी इसे एक्सेस करने के लिए आपको चाहिए होगा इंटरनेट, जैसे इंटरनेट बैंकिंग हो गया आपका,
या IRCTC का वेबसाइट हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, these are very big applications now. हॉटस्टार हो गया, these are very applications, bigger applications. They are running on multiple machines. They are running on multiple. देन हमने थोड़ा जावा के बारे में इंट्रोड्यूस किया था. जावा क्या है? जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड यूजिंग जावा वी कैन डेवलप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दैट इज स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस. और जावा वाज रिलीज्ड इन फर्स्ट वर्जन ऑफ 1995. इसका काम स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 1990 में. और it is introduced at a company called as Sun Microsystem. There was a team called as Green Team, and that team was led by James Gosling. And initially, development of Java was led by this particular team, and they created first product and they gave the name as Oak. But that was already registered with some other company, so they have renamed that to Java. It is just a kind of a type of a coffee. First version was released in 1995. What is the latest version? Java 21, that will be released in September 2023. And there was a major version, that is Java 8, that was released in March 2014. March 2014, what was that? So we will be covering Java 8, 9 and some features of this Java 10 or 11 also. And then we understood what is Java, why to use Java, and what type of softwares we can build with the help of Java. Who developed Java? Java was developed by James Gosling. Now Sun Microsystem is taken care by now. It is now acquired by Oracle. Now Java 21 is the latest version. Why Java was developed? We have also seen that last time. So using Java, whatever the softwares you are going to develop, that softwares will need less memory, less power, and less execution time. They will need less power, less memory, and less execution time. और दूसरा एक और खास बात थी कि जो भी जावा के applications develop करे थे, so that applications once compiled on single machine, they can run on any other machine. वो कोई भी machine पर चल सकते हैं. So that is called as platform independence. ये भी एक जावा का रीजन था कि it is very popular. It is very popular. ठीक, हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस की करे थे लास्ट क्लास में. देन स्टार्ट विद न्यू क्लास. Okay. Now today we'll be talking about Java only. In general, we'll be talking about everything. We'll be talking about Java. Okay. Now let's talk about the Java. What is Java? Why do we need Java? These questions will, how Java works. What is Java? We'll try to understand this. What is Java? To solve problems. Perfect. It is a, what kind of programming language? It is a high level programming language. Is a, now there are lot many things. First of all, we'll try to understand. It is a high level programming language, which is something we are going to use to write the programs. अभी जावा को और बहुत सारे एडजेक्टिव्स बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो फीचर्स बोल सकते हो. जैसे कोई भी एक आप प्रोडक्ट होता है मार्केट में लॉन्च, तो उसकी बहुत सारी फीचर्स होती है. जैसे कोई मोबाइल होता है, कार होता है, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी कुछ फीचर्स होती है. तो जब ये लॉन्च किया था उन्होंने, तो उन्होंने कुछ फीचर्स भी रोल आउट किए थे. रोल आउट किए थे मतलब उन्होंने मार्केट में बोला था कि दीज आर दी फीचर्स वी आर रोलिंग आउट. तो कोई भी एक प्रोडक्ट होता है तो उसका हम फीचर्स देखते हैं. लेट्स से कोई हम मोबाइल खरीदने जाते हैं तो हम उसका फीचर्स देखते हैं कि क्या कैमरा है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है. तो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी फीचर्स देखा जाता है. इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट. So what is the use of that product? Java is a product of Oracle. Now Java is a product of Oracle company. So what that product is useful for? Using Java, what we can do? We can make software. Now what type of softwares you can make using Java? You can make a standalone applications, web application, enterprise applications, right? We can create the softwares. Then the programming language that they have introduced, so it should be beneficial for the developer also and for the end customer also, right?
So there is a combination of feature list they have rolled out. What is the feature list they have rolled out? The features अभी डेवलपर को भी कुछ फीचर अवेलेबल होना चाहिए और एंड कस्टमर के लिए भी। अभी डेवलपर क्या चाहता है कि उसका जो सिंटैक्स होगा वो बहुत सिंपल होना चाहिए, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वहाँ पर विच इज़ हैविंग विच इज़ ए सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपल उन्होंने क्यों बोला है उसे, वाई दे आर कॉलिंग एट सिंपल, बिकॉज सिंटैक्स इज सिंप्लीफाइड। इसका क्या मतलब है? नाउ जावा से पहले बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, देयर वर लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बिफोर जावा। तो सिंटैक्स इज सिंप्लीफाइड एज कंपेयर टू सी एंड सी प्लस प्लस। 20 साल से लोग किस में प्रोग्रामिंग कर रहे थे? 1971 से ऑलमोस्ट 20 साल लोग किस में प्रोग्रामिंग कर रहे थे? सी और सी प्लस प्लस में। तो वहां पर सिंटैक्स बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स था और डिफिकल्ट था, सो दैट सिंटैक्स दे हैव सिंप्लीफाइड नाउ। नाउ पर सिंटैक्स इज सिंप्लीफाइड, और सी प्लस प्लस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट भी थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट थे। नाउ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स, lot of complex concepts from C, C++, such as pointers, then friend functions। ये कुछ फीचर्स, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है विच आर वेरी कॉम्प्लेक्स। पॉइंटर्स, फ्रेंड फंक्शन, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, दीज आर सम फीचर्स। एरेज कॉम्प्लेक्स नहीं है, दैट इज सिंप्लीफाइड, बट सिंटैक्स थोड़ा डिफिकल्ट है वहाँ पर। So lot of complex concepts from C, C++, such as pointers, friend function, operator overloading are are removed in Java, right? अभी आपने एक बीच में एक एप्लीकेशन देखा होगा, थ्रेड सुना है? थ्रेड एप्लीकेशन, उसको कैसे बनाया उन्होंने? नहीं, एग्जैक्ट ट्विटर जैसे ही बनाया उन्होंने, पूरा ट्विटर कॉपी किया। तो इससे फायदा क्या हुआ? फायदा या मतलब किन का फायदा हुआ? कंज्यूमर इज ऑलरेडी फेमिलियर विद द सिंटैक्स, कंज्यूमर इज already aware of all the features, consumer is already aware of all the features. Now it is very easy for him to get used to of that particular thing that he can start using from day one itself. So similarly, Java ka syntax, it is highly influenced by C and C++, so it is not difficult for the C and C++ developers to switch to Java, right? So Java is very much influenced by C and C. So it is easy for C, C++ developers to switch to, ये बहुत easy था switch करना। सिंटैक्स बहुत ज़्यादा आप देखोगे, बहुत ज़्यादा मेथड्स हो गया, वेरिएबल्स हो गया, बहुत ज़्यादा सिमिलरी है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि बहुत ज़्यादा डेवलपर्स को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई जावा सीखने के लिए और उसको माइग्रेट करने के लिए। ठीक, simple, okay, now this is simple. Now it is Java is a high level programming language which is a simple programming language. How can you say it is a simple? Your syntax is simplified, your complex concept from C and C++ are removed, and the syntax is also very much influenced by C and C++, so it is easy for a C developer to switch to Java. So one of the very much important feature, this is very much important. दूसरा, जावा का अभी बहुत सारे ऐसे लिस्ट है, वी हैव लॉट ऑफ लिस्ट ऑफ फीचर्स ऑफ जावा। तो जावा इज सिंपल, एंड एनीवन नोज एनी फीचर ऑफ जावा ऑनलाइन? क्या सोच सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या मतलब क्या फीचर होना चाहिए?
इजी टू यूज तो सिंपल कर दिया उसे। ओके, लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स, परफेक्ट परफेक्ट। यहाँ पर आपको मिलेगा लॉट ऑफ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क। इससे होगा क्या, ये फायदा क्या होता है इसका? इसका फायदा ये है कि वी कैन वी हैव रेडी टू यूज वी हैव रेडी टू यूज lot of code provided by Java। इससे होता क्या कि आपको जो भी काम है फटाक से ऑलरेडी कोड अवेलेबल है, जस्ट यूज दैट एंड स्टार्ट यूज। बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स उन्होंने इंप्लीमेंट करके रखा है। दैट इज पार्ट ऑफ एज पार्ट ऑफ कलेक्शन दे हैव डिफाइंड लॉट ऑफ लाइब्रेरीज, लॉट ऑफ फंक्शंस, लॉट ऑफ algorithms दे हैव डिफाइंड। उससे होता क्या है कि डायरेक्टली यू कैन use the code and solve your business। What else? This is simple, and there is also developer needed framework। Large community support means there are a lot of people who know Java। मतलब कोई भी आपको दिक्कत आती है, यू जस्ट पोस्ट इट ऑनलाइन, यू विल गेट द हेल्प, राइट। और कम्युनिटी ज़्यादा होने का फायदा होता है कि बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ कोड, जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस करी हुई इतने सालों में लोगों ने, उनके सॉल्यूशंस रेडीली अवेलेबल है। you have a lot of solutions readily available। there are lot many open source means free to use libraries, tools, frameworks are there in Java because of this। so there are a lot of people who are using Java and ready to in public forums as Stack Overflow, there are lot many। what else? now अभी एक डेवलपर के एक और इशू था कि मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ पर यूजर को, पहले डेवलपर को करना पड़ता था। what used to happen? memory allocation and deallocation is now taken care by Java। this headache is also removed। तो C++ में डेवलपर को खुद मेमोरी एलोकेट करना पड़ता था। so that memory allocation deallocation is now taken care by Java। so Java is in high performance। high performance means there is a faster execution of the program। then secure, it is secure। Java is secure। Java provides lot of predefined security manager packages so that application becomes secure। So your application becomes secure because Java has already predefined lot of security manager packages। इसका फायदा ये होता है कि आपका एप्लीकेशन बन जाता है सिक्योर। तो जावा ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कोड लिख के रखा है, जिस मतलब सिक्योरिटी हैंडल करने के लिए आपके एप्लीकेशन की। वी आर टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी। इंटरनल ऑब्जेक्ट्स जो रहेंगे उनका सिक्योरिटी हो गया, आपका कोड का सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा उन्होंने कोड ऑलरेडी बना के रखा है। तो बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ सिक्योर। एंड देयर इज वन मोर रीजन, Java does not provide direct access to the memory location to the developer। मतलब डेवलपर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलेगा आपकी मेमोरी का। तो दिस इज आल्सो सिक्योर। Now Java is called as multi-threaded। multi-threaded का मतलब I will explain not।
मल्टी थ्रेडेड का मतलब होता है, मल्टी मीन्स मल्टीपल, थ्रेड मीन्स ब्लॉक ऑफ कोड। क्या होता है? मल्टी मीन्स मल्टीपल एंड थ्रेड मीन्स ब्लॉक ऑफ। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है, लेट से आपके पास 10,000 लाइन का कोड है। अभी आप एक लाइन एग्जीक्यूट करो तो बहुत टाइम लगेगा, राइट? लेकिन आप लेट से 1,000 लाइन का एक एक ग्रुप करोगे, और 1,000 लाइन मतलब ऐसे 10 ग्रुप्स एक साथ पैरेलली चलाओगे, व्हाट विल हैपन? इट विल रिड्यूस योर एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जाम्पल, अभी लेट से मुझे इस पूरे क्लासेस को पूरा पेंट करना है। एक पेंटर को, अगर एक वर्कर को उसे पेंट करने के लगता है लेट से 10 दिन, राइट? इफ आई डिवाइड दिस टास्क into 10 different painters, how many days it will take? Only one। अभी जो काम था उसको आपने डिवाइड किया 10 लोगों में, राइट? तो जो कोड था आपने उसे क्या किया, 10 पार्ट में डिवाइड किया और 10 पार्ट एक साथ एग्जीक्यूट किए। इससे होगा क्या? आपका एग्जीक्यूशन टाइम कम लगेगा, आपका प्रोग्राम फास्ट होगा। तो वी कैन, व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग? रनिंग मल्टीपल रनिंग मल्टीपल blocks of code at the same time, called as multi threading। क्या बोलते हैं उसे? थ्रेडिंग। मल्टीपल ब्लॉक्स, अभी लेट से 1,000 लाइन्स का कोड है, उसे आप 10 में डिवाइड करो, 10 ब्लॉक्स एक साथ एग्जीक्यूट करो, उससे क्या होगा? आपका एग्जीक्यूशन टाइम कम लगेगा। दिस मल्टी थ्रेडेड। नाउ जावा इज आल्सो कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इन जावा everything is represented using class and object। अभी ये थियरी कॉन्सेप्ट है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अभी ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट या उप्स कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, दिस इज अ थियरी कॉन्सेप्ट दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड वे बिफोर योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से पहले उप्स कॉन्सेप्ट थे। योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स वेयर वे बिफोर, क्लास एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट इज वे बिफोर योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, ये आपको जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे आई विल एक्सप्लेन, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, क्लास और ऑब्जेक्ट ये दो कॉन्सेप्ट ऐसे ही एक दूसरे के डिपेंडेंट है। अभी आपको एक सिंपल एनालॉजी बताता हूँ। क्लास मतलब आपका क्लासिफिकेशन या स्ट्रक्चर। अभी लेट्स से आपको कोई घर बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? पहले तो प्लान बनाते हो, स्ट्रक्चर बनाते हो, वो पेपर पे बनाते हो। उस प्लान का यूज करके आप क्या करते हो? घर बनाते हो। सो दैट एक्चुअल होम इज नथिंग बट योर ऑब्जेक्ट एंड दैट प्लान इज नथिंग बट क्लास और स्ट्रक्चर। तो सेम कॉन्सेप्ट हम कहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी। ये थ्योरी कॉन्सेप्ट हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज करते हैं। इसका फायदा क्या होता है? आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने से क्या होता है? आपका कोड बहुत सॉर्टेड होता है। इट इज वेरी इजी टू रीड, वेरी इजी टू राइट एंड इट इज वेरी इजी टू एक्सटेंड ऑल्सो और स्केल ऑल्सो। मतलब आपका अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, it is a good feature, because of that your code is more readable। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का मतलब होता है we represent the code in terms of class and object। क्लास एंड ऑब्जेक्ट में कोड रिप्रेजेंट करने से फायदा ये होता है, आपका कोड बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है, ऑर्गेनाइज होता है, और इट इज़ वेरी इजी टू राइट ऑल्सो, इट इज़ वेरी इजी टू रीड ऑल्सो एंड इट इज़ वेरी इजी टू स्केल ऑल्सो। ये आपका फायदा होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट करने का। So this is also one of the favorite concept we will be dealing with। क्लास ऑब्जेक्ट 2 घंटे हम इसी में डिस्कस करने वाले, जैसे हम स्टार्ट करेंगे क्लास ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स वी हैव 3 components इन दैट, क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास कंपोनेंट्स एंड ओप्स। ये 3 कॉन्सेप्ट इट विल टेक ऑलमोस्ट थ्री वीक्स इट विल टेक। तो क्लास ऑब्जेक्ट ओप्स कॉन्सेप्ट इट विल टेक 2 to 3 weeks। तो इसे हम टाइम देंगे बहुत ज़्यादा क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझने की। उसके बाद जावा इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब होता है जावा का यूज करके आप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो। यू कैन डेवलप डिस्ट्रीब्यूटेड इन जावा। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब enterprise application which are distributed on multiple server machines, so that we can do with the help of Java। ठीक।
Now Java provides one very important feature that is called as प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट दिस मीन्स इज, इसका मतलब आई विल टेल यू। प्लेटफॉर्म का मतलब अभी के लिए समझो मशीन, प्लेटफॉर्म का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम समझो अभी के लिए। व्हाट इज प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म मीन्स एनीथिंग which lets you run the program। क्या होता है? प्लेटफॉर्म का मतलब होता है एनीथिंग विच लेट्स यू रन द प्रोग्राम। एग्जाम्पल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम is allowing us to run other applications such as notepad। So operating system is a platform, operating system is called as platform। दूसरा, लैपटॉप हार्डवेयर मशीन, लैपटॉप हार्डवेयर is allowing us to run the operating system। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म, हु इज प्लेटफॉर्म? हु इज प्लेटफॉर्म हियर? लैपटॉप, operating system, these are nothing but are platforms। अभी के लिए हम हमारे टर्म में यूज करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। प्लेटफॉर्म का मतलब होगा आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मतलब क्या? हु इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। वी आर कॉलिंग एट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डू मीन बाय जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है? व्हाट डू मीन बाय दिस? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। चलो, हमारा यही आज एजेंडा है, प्लेटफॉर्म सीखना है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी क्या होता है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। ओके, so Java is a high level programming language which is a simple programming language since the syntax is simplified। Java has lot of predefined frameworks and libraries। इसका मतलब बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कोड बना के रखे आपके लिए that you can readily use। Then large community support, there are a lot of people who know Java, so if you stuck somewhere, if you find, if you want to have some solution, you will have ready to use solutions। Robust memory allocation deallocation is taken care by Java, so it is a robust high performance। There is a faster execution of program in Java। Secure, Java provides lot of predefined security managers packages so that application becomes secure। So Java does not give you direct access to your memory locations to the developer। then उसके बाद हमने देखा मल्टी थ्रेड। मल्टी थ्रेडेड मतलब मल्टी मतलब मल्टीपल, थ्रेड मीन्स ब्लॉक ऑफ कोड, मल्टीपल blocks of code if you are running at the same time, it means multi-threaded। so because of this what happens, multi-threaded feature एक अच्छा फीचर है जिसके कारण आपका एप्लीकेशन बन जाता है वेरी फास्ट, मतलब कम टाइम में ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, इन जावा एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड इन क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद जावा इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका मतलब होता है जावा का यूज करके आप डिस्ट्रीब्यूटेड या एंटरप्राइज एप्लीकेशंस बना सकते हो। देन हमने एक फीचर अभी ऐड किया दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऑपरेटिंग, मतलब एनीथिंग विच इज हेल्पिंग यू रन द प्रोग्राम। अभी आपका लैपटॉप पे ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो या रन करते हो, सो दैट हार्डवेयर इज, दैट लैपटॉप इज नथिंग बट योर, लैपटॉप इज नथिंग बट योर प्लेटफॉर्म। और ऑपरेटिंग सिस्टम बाकी एप्लीकेशन रन करने के लिए आपको अलाउ करती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या बन गया, प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म इज नथिंग बट एनीथिंग विच लेट्स यू रन द प्रोग्राम। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, जो कोई आपको प्रोग्राम रन करने के लिए इन्वायरमेंट दे उसे बोला जाता है प्लेटफॉर्म। ऑपरेटिंग अभी के लिए बोल सकते हैं ना, विंडोज प्लेटफॉर्म, आईओएस प्लेटफॉर्म, ऐसे बोलते हैं वहां पर। जावा इज, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी प्लेटफॉर्म।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी प्लेटफॉर्म। अभी के लिए इसका समझते हैं व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So why we are calling Java is programming platform independent programming language? I'm just writing that. So Java program compiled on one machine or one platform, platform मतलब machine बोल सकते हो, Java program compiled on one platform can be executed on any other platform। मतलब एक मशीन पर कंपाइल करके जो कंपाइल किया हुआ कोड मिलेगा उसे आप कोई भी मशीन पर चला सकते हो। वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस फीचर ओनली, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी क्या होता है, डिपेंडेंसी क्या होता है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टुडे ओनली। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब होता है कि जावा का प्रोग्राम आप एक मशीन पर या एक प्लेटफॉर्म पर कंपाइल करके आप उसे कोई भी मशीन पर चला सकते हैं। यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी क्वेरी ऑनलाइन? यस आरती, आकाश, परफेक्ट, ठीक है। चलो देखते हैं, अभी दूसरा क्वेश्चन हमें देखना है आज। हमने देखा कि व्हाट इज जावा, व्हाट इज जावा एंड व्हाई टू यूज जावा, यू कैन टेल दिस, व्हाट इज जावा एंड व्हाई टू यूज जावा। तो जावा का ये फीचर्स है। कोई आपको पूछे कि जावा क्यों यूज करना चाहिए, तो जावा आपने यूज करना चाहिए बिकॉज जावा इज सिंपल। सिंपल मतलब उसका सिंटैक्स सिंपल है, और जावा में आपको बहुत ज़्यादा प्रीडिफाइंड कोड मिलेगा जिसका यूज करके आप रेडी टू यूज कोड होता है, दैट इज रेडी टू यूज। दूसरा, अगर आप प्रोग्राम लिखते हो जावा में और कोई इशू आता है आपको, तो देर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु नो जावा, सो दे विल हेल्प यू, और कम्युनिटी इज देयर, यू जस्ट पोस्ट ऑनलाइन एंड दे विल ट्राई टू हेल्प यू। जो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो अभी प्रॉब्लम फेस करी हो पहले किसी ने ऑलरेडी फेस करी होगी और उसका सोल्यूशन भी होगा ऑलरेडी, तो ऐसा भी हो सकता है। देन मेमोरी एलोकेशन डी एलोकेशन ये ऑलरेडी टेकन केयर बाय जावा, डेवलपर को कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और इट इज हाई परफॉर्मिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है। सिक्योर, सिक्योर क्यों बोला जाता है, जावा ने बहुत ज्यादा ऑलरेडी कोड बना के रखा है पैकेजेस के अंदर, पैकेज मतलब फोल्डर के अंदर। तो ऐसा सिक्योरिटी मैनेजर पैकेजेस कोड दिया है जिसका यूज करके आपका एप्लीकेशन सिक्योर बन जाता है। देन एक और बात, जावा डेवलपर को मेमोरी लोकेशन का एक्सेस नहीं देती है डायरेक्ट, यू कैन नॉट एक्सेस द मेमोरी लोकेशन, जावा खुद यूज करेगा लेकिन डेवलपर को एक्सेस नहीं। देन जावा इज मल्टी थ्रेडेड ऑल्सो, मल्टी थ्रेडेड मतलब मल्टी मीन्स मल्टीपल एंड थ्रेड मीन्स ब्लॉक ऑफ कोड, तो आपके पास मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ कोड रहेंगे, उनको आप एक साथ चला सकते हो, तो दैट फीचर इज अवेलेबल इन द जावा। देन जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसका मतलब होता है एवरीथिंग इन जावा वी कैन रिप्रेजेंट यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट, वी कैन रिप्रेजेंट एवरीथिंग यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। देन जावा इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका मतलब होता है यूजिंग जावा वी कैन डेवलप distributed applications, enterprise based applications या bigger applications। देन लास्ट फीचर हमने देखा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम या एनीथिंग विच इज हेल्पिंग यू टू रन द प्रोग्राम। अभी जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा क्यों बोला जाता है, बिकॉज अगर आपने जावा में प्रोग्राम लिखा, उसे एक मशीन पर कंपाइल किया, अगर उस कंपाइल्ड कोड को आप दूसरे कोई भी मशीन पर लेके जाते हो तो आपका कोड चलेगा, दैट फीचर इज नथिंग बट प्लेटफॉर्म independency। So we will try to understand what is platform dependency, what is platform independency in detail now। यहाँ तक क्लियर है? ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। चलो देखते हैं। नाउ वी विल try to understand this question with how part। So how C++ works, or how
C and C++ are platform dependent. इस क्वेश्चन को समझते हैं, हाउ C++ वर्क्स और हाउ C++ आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। ठीक है, उससे पहले कुछ को समझते हैं टर्म्स। सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड, सोर्स कोड मतलब जो कोड आप डेवलपर ने लिखा होता है। सो डेवलपर रिटर्न कोड क्या होता है? सोर्स कोड, कोड रिटर्न बाय डेवलपर, कोड रिटर्न बाय डेवलपर कॉल्ड एज सोर्स कोड। फिर उसके बाद बोला जाता है कंपाइल्ड कोड क्या होता है? व्हाट इज कंपाइल्ड कोड? और इससे पहले हम समझते हैं कंपाइलर। व्हाट इज कंपाइलर? So it is a software. It is a software developed by programming languages developers. मतलब जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया होता है। तो इस सॉफ्टवेयर का क्या यूज होता है? तो यूजिंग कंपाइलर सॉफ्टवेयर, यूजिंग कंपाइलर सॉफ्टवेयर, सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड आपका चेक किया जाता है। कंपाइलर को इनपुट क्या होता है? आपने जो डेवलपर ने कोड दिया, ये इनपुट हम किसे देंगे? कंपाइलर सॉफ्टवेयर को। यूजिंग कंपाइलर सॉफ्टवेयर, source code is checked for any grammatical या syntax errors, syntax or grammatical errors, and if any errors are there, if any errors are there, it will show that, will show that. If no errors are there, if no errors are there, then it will generate the output, it will generate the output file. That's it. Then what is compiled code? What is compiled code? What is compiled code? अभी जो कंपाइलर को आपने सोर्स कोड दिया था इनपुट, तो कंपाइलर कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट करेगा, सो दैट आउटपुट इज कॉल्ड एज कंपाइल कोड। तो कोड which is the code which is generated by compiler software called as compiled code. The code which is generated by compiler software is called as compiled code. The next is executable code. What is executable code? The code which is ready to execute or run on the given, मतलब जो ऐसा कोड है कि जो डायरेक्टली आप रन करते हो, एग्जीक्यूटेबल, आप .exe फाइल जैसे बोल सकते हो, दैट इज काइंड ऑफ डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल, दैट इज गोइंग टू रन ऑन द गिवन मशीन। ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। वंस यू नो दिस बेसिक्स, देन वी आर एबल टू रीड द I will try to understand how C++ works. ये सारी टर्म्स क्लियर है सबको? सोर्स कोड मतलब जो डेवलपर कोड लिखा है उसे बोलते हैं सोर्स कोड। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो वो किसने बनाया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसने बनाया वही बनाते हैं। सी का अलग होगा, C++ का अलग होगा, जावा का अलग होगा, पाइथन का अलग होगा, सी शार्प का अलग होगा। तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग अलग कंपाइलर होता है, अलग अलग कंपाइलर सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका काम क्या होता है कंपाइलर का? आपका जो सोर्स कोड है उसे रीड करना और उसमें कुछ ग्रामेटिकल या सिंटैक्स एरर है वो चेक करना। इफ इट इज प्रेजेंट, इफ देयर आर एनी एरर्स, इट विल शो दैट कि ये सारे एरर्स है। अगर कोई एरर्स नहीं तो कुछ ना कुछ ये आउटपुट जनरेट करेगा। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपना अपना आउटपुट जनरेशन का लॉजिक अलग अलग लिखा है। कोई डॉट क्लास जनरेट करता है, कोई बाइनरी जनरेट करता है, या जो भी उनका फॉर्मेट है वो दैट इज जनरेटेड, that is generated. So the compiled code, what is compiled code then?
द कोड विच इज जनरेटेड बाय द कंपाइलर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज कंपाइल कोड। एग्जीक्यूटेबल कोड मतलब ऐसा कोड आप डायरेक्टली मशीन पर एग्जीक्यूट कर सकते। ठीक, इसे समझते हाउ सी सी प्लस प्लस वर्क्स और हाउ सी प्लस प्लस आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अब यहाँ पर होता क्या है, अभी आप डेवलपर क्या करेगा, कोई फाइल में कोड लिखेगा और उस फाइल को सेव करके लेट्स से डॉट सी, ऐप डॉट सी। नाउ दिस फाइल इज गोइंग टू बी द इनपुट टू अ सॉफ्टवेयर, is going to be an input to a software called as compiler. So compiler we have C compiler. तो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए प्रोग्रामिंग बनाए कंपाइलर, दैट इज कॉल्ड एज C कंपाइलर। अभी इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का काम है एरर है या नहीं, एरर है तो यहाँ पर शो करो, नहीं है देन इट इज गोइंग टू जनरेट समथिंग कॉल्ड एज, it is going to generate a file, it will generate a file output, this is the output. Now this output is nothing but your binary code, this is binary code, it will have zeros 1 0 1, so this file is containing zeros and ones, right? अभी ये let's say ये सारा चल रहा है आपके विंडोज मशीन पर, now this is working on a विंडोज मशीन, आपने कोड भी लिखा है विंडोज मशीन पर, कंपाइलर भी रनिंग है, कंपाइलर सॉफ्टवेयर है वो कहाँ पर चल रहा है, विंडोज मशीन पर। और अभी देखो उसने जो जीरोज एंड वन जनरेट किया होगा, दिस जीरोज एंड वंस इज अंडरस्टूड बाय ओनली विंडोज मशीन। किससे समझ में आता है वो, विंडोज मशीन को समझ में आता है। दिस पर्टिकुलर कोड इज अंडरस्टूड बाय विंडोज मशीन, दिस पर्टिकुलर कोड इज अंडरस्टूड बाय विंडोज मशीन, ठीक है। नाउ अगर ये कंपाइलर होता लिनक्स मशीन पर, नाउ अगर ये कंपाइलर होता लिनक्स मशीन पर, तो ये जनरेट करता जीरोज एंड वंस विच आर अंडरस्टूड बाय लिनक्स मशीन। अभी मेरे पास दूसरा एक मशीन है, let's say I have another machine, that is let's say Mac machine. Now if I take this particular binary code and if I try to run on this particular machine, it will not. Why? Because your compiled code, this particular code is now dependent on which machine, Windows machine, because जो binary code generate हुआ था that is only understood by Windows machine, not by any other machine. तो यहाँ पर ये डिपेंडेंसी बन गया। व्हाट डिपेंडेंसी, जो कंपाइल कोड है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए, विंडोज मशीन, ये डिपेंडेंसी हो गया आपका। तो योर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डिपेंडेंट ऑन द प्लेटफॉर्म टू रन द कंपाइल्ड कोड। क्या तो क्लियर है, क्या हो रहा है यहाँ पर, इन शॉर्ट डायरेक्टली कंपाइलर जनरेट करना है जीरोज एंड वंस, कौन से जीरोज एंड वंस, विच आर अंडरस्टूड बाय ओनली विंडोज मशीन। मैक मशीन के लिए अभी आप मुझे बताओ, आप लेट से आपको कोई वीएलसी मीडिया प्लेयर डाउनलोड करना है, विंडोज के लिए आप .exe फाइल डाउनलोड करते हो, और मैक के लिए आप .dmg फाइल डाउनलोड करते हो, लिनक्स के लिए आप .bin फाइल डाउनलोड करते हो। ये अलग अलग फाइल्स क्यों डाउनलोड करते हो, क्योंकि VLC सॉफ्टवेयर आप विंडोज के लिए .exe डाउनलोड करते हो, मैक के लिए .dmg करते हो, और लिनक्स के लिए .bin। ऐसा क्यों, कि ये जो VLC सॉफ्टवेयर है सबको अलग अलग एग्जीक्यूटेबल्स चाहिए, ये .exe मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, तो सबको जीरोज एंड वंस अलग अलग चाहिए। विंडोज मशीन को अलग जीरोज एंड वंस चाहिए, मैक मशीन के अलग जीरोज एंड वंस चाहिए, एंड लिनक्स मशीन के लिए डिफरेंट zeros and ones they required. Getting the idea? So that's the reason we need different set of zeros and ones to be understood by different machine. मतलब विंडोज मशीन को zeros and ones डिफरेंट चाहिए, मैक मशीन के लिए डिफरेंट zeros and ones चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पर zeros and ones कौन से जनरेट किए, zeros and ones which are only understood by विंडोज मशीन। तो यहाँ पर कौन डिपेंडेंट बना किसके ऊपर, आपका कंपाइल कोड डिपेंडेंट बना किसके ऊपर, विंडोज प्लेटफॉर्म पर। दूसरे प्लेटफॉर्म पर चल सकता है क्या, नहीं, राइट। चलो मैं आपको इसको थोड़ा रियल टाइम और आपको समझाता हूँ। लेट्स से आपने कोई दुकानदार से लेट्स से दुकानदार को दुकानदार ने आपको बोला कि मुझे कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर बना के दे दे, तो हर दिन का कितना एक्सपेंस इन हो रहा है, आउट हो रहा है, उसके लिए आपके सॉफ्टवेयर बना के देना है। अभी दुकानदार के पास लेट्स से विंडोज मशीन है और आपके पास है मैक मशीन, तो आपने क्या किया, पूरा सॉफ्टवेयर बनाया, उसे कंपाइल किया, उसने क्या जनरेट किया, जीरोज एंड वंस। आपने सी प्रोग्राम में पूरा सॉफ्टवेयर बना के रेडी कर दिया, पूरा एकदम सही चल रहा है। देन आपने क्या किया, बाइनरी कोड, बाइनरी कोड कौन कौन सा जनरेट होगा, आपके पास मैक मशीन है,
आपके पास मैक मशीन है तो आपका कौन सा जनरेट होगा, मैक वाला जीरोज एंड वंस। अभी वो सेम जीरोज एंड वंस आप उसको चला सकते हो क्या विंडोज मशीन पर? तो ये आप डिपेंडेंट हो गए। नाउ योर प्रोग्राम कंपाइल कोड इज डिपेंडेंट ऑन ओनली मैक मशीन, बट कस्टमर को क्या चाहिए, विंडोज मशीन वाला कंपाइल कोड जो उसे चला पाए। तो ये डिपेंडेंसी बन गया। दिस इज द डिपेंडेंसी ऑफ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये समझा आपको, हाउ सी एंड सी प्लस प्लस आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। कैसे लिखोगे आप उसे? the code the code which is written in C program given to the C compiler will generate the binary code generate the binary code which is understood by only underlying machine. Example, if C program is compiled on Windows machine, then it will generate the binary code which is understood by Windows machine. So hence C program compiled on one machine cannot run on machine बोलने से अच्छा है प्लेटफॉर्म, विंडोज प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं हम, on platform. C program compiled on one platform cannot run on other platform. Hence it is platform dependent programming language. Hence it is a platform dependent programming. Clear ये वाला? How C is platform dependent? ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? Perfect. I will try to understand now the same question but for the Java. इस क्वेश्चन में किसी को डिफिकल्टी ऑनलाइन गाइस? Perfect. We have how Java works or how Java is platform independent. You have to understand this. किसी को पता है ये ऑलरेडी? अभी तो मैंने प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मतलब आपका जो कंपाइल कोड है दूसरे मशीन पर नहीं चलता तो वो क्या बन गया, डिपेंडेंट। मतलब विंडोज के लिए ही वो चलेगा, बस मैक पर नहीं चलेगा, तो ये डिपेंडेंसी बन गया। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड अगर आप एक मशीन पर एक प्लेटफॉर्म पर कंपाइल करते हो और उसे कोई भी मशीन पर चला सकते हो, इसका मतलब दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अभी इसको समझते हैं हाउ इट इज वर्किंग इन द जावा आल्सो। ओके, now see here, now developer will write the program, and he will save in the dot java file. यहाँ पर कुछ तो उसने प्रोग्राम लिखा है टू कंप्लीट सम टास्क, लेट्स से कैलकुलेशन हो सकता है जो भी है। नाउ that program is given to the a software called as java compiler. अब ये सॉफ्टवेयर किसने बनाया होगा, जावा वालों ने। java compiler is a software which is developed by java people only. Now what this does, it does two things. If there are any errors it will show, if there are no errors it will generate a output. Now this file is called as source code, and whatever the output it is going to generate, it will be called as
compiled code. This is called as compiled code. कंपाइल कोड, इसे क्या बोलोगे आप? कंपाइल कोड। अभी इस पर्टिकुलर फाइल में देखना, यहाँ पर ध्यान देना, इस पर्टिकुलर अभी ये जो फाइल जनरेट होगी इस फाइल को हम बोलते हैं लेट्स से डॉट क्लास फाइल। इसका एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट क्लास फाइल। एक्सटेंशन विल बी डॉट क्लास फाइल, रिमेंबर। अब इस पर्टिकुलर फाइल में क्या होता है? इस पर्टिकुलर फाइल में होता है समथिंग कॉल्ड एज बाइट कोड। अब बाइट मतलब इसका मतलब होता है, आप बोल सकते हो इंटरमीडिएट, इंग्लिश जैसे ही कोड होता है, इंग्लिश लाइक कोड। मतलब जीरोज एंड वंस नहीं होता है इस पर्टिकुलर फाइल में, बाइनरी कोड नहीं होता है। इस पर्टिकुलर फाइल में क्या नहीं होता? बाइनरी कोड नहीं होता है। ये एक इंटरमीडिएट कोड बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो आप? इंटरमीडिएट कोड। ये बाइनरी कोड नहीं है। लेट मी टेल यू, इट इज नॉट बाइनरी कोड, इट इज जस्ट ए इंटरमीडिएट कोड। इसे बोलते हैं लोग मैजिक कोड भी बोलते हैं इसे। लॉट ऑफ पीपल कॉल इट एज मैजिक कोड, और उसे बाइट कोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बाइट कोड। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बाइट कोड। ठीक। नाउ लेट्स assume that this is running on my Windows machine. This is running on Windows machine. Now I have multiple machines. अभी ये कंपाइल कोड है, मुझे क्या करना है अभी? ये कंपाइल कोड को दूसरे मशीन पर चलाना है। आई वांट टू रन दिस ऑन मल्टीपल अदर मशीन। सो आई हैव अनदर मशीन, लेट्स से दिस इज माय Windows machine, this is Mac machine, this is my Linux machine. So I have multiple machines. This is also, let's say this is Windows machine I have, this is Mac machine I have, this is I have Linux machine, and we have, let's say, Solaris also, right? Now my intention is take this particular code and give it to this particular machine. Now I want to run this code on all of these machines. क्या करना है मुझे? ये जो कंपाइल कोड है मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म पर रन करना है। तो रन करने के लिए आपने क्या किया? वो कंपाइल फाइल अपने इस पर्टिकुलर मशीन पर लेके आए। अभी इस मशीन पर तो इन मशीन को क्या समझ में आता है? कोई भी मशीन को क्या समझ में आता है? जीरोज एंड वंस। आपके पास जीरोज एंड वंस है क्या? नो। देन ये कोड यहाँ पर कैसे चलेगा फिर? आपका जीरोज एंड वंस तो नहीं है आपके पास अभी भी। मशीन को समझने के लिए क्या चाहिए? जीरोज एंड वंस। लेकिन आपके पास अभी बाइनरी कोड नहीं है। यू डू नॉट हैव द मशीन कोड, यू डू नॉट हैव द जीरोज एंड वंस, यू हैव ओनली इंग्लिश लाइक कोड। क्या है आपके पास? इंग्लिश लाइक कोड। ये तो नहीं चलेगा। फिर जावा एक और ट्रिक यहाँ पर जावा ने करी है। जावा ने सबको बोला है कि आप अपने मशीन पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। उन्होंने क्या बोला है? एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। कौन सा सॉफ्टवेयर? लेट से यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का बोला है उन्होंने। उस सॉफ्टवेयर का नाम है JRE। क्या नाम है उसका? JRE। तो हर एक मशीन पर JRE नाम का सॉफ्टवेयर। तो विंडोज़ के लिए अलग JRE सॉफ्टवेयर होगा, मैक के लिए अलग JRE सॉफ्टवेयर होगा, लिनक्स के लिए अलग JRE सॉफ्टवेयर होगा। जैसे आप मीडिया प्लेयर डाउनलोड करते हैं ना VLC वगैरह अलग अलग मशीन के लिए, तो वैसे ही JRE नाम का एक सॉफ्टवेयर विंडोज़ के लिए अलग होगा, मैक के लिए अलग होगा, लिनक्स के लिए और सोलारिस के लिए अलग। ये वन टाइम इंस्टॉलेशन, दिस इज वन टाइम इंस्टॉलेशन। अगर ये सॉफ्टवेयर इस पर्टिकुलर मशीन पर नहीं है तो आपका प्रोग्राम जावा का कंपाइल कोड नहीं चलेगा। अभी इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का काम क्या है? टेक दिस डॉट क्लास फाइल एंड जनरेट बाइनरी कोड। क्या करना उसको? बाइनरी कोड। और ये सारा बाइनरी कोड सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा? ये रहेगा सारा डिफरेंट। देखो यहाँ पर आपने कोड लिखा। now that code is given to java compiler. Now your code works fine, so it generated a byte code or a dot class file or intermediate code or english like code. अभी ये आपकी विंडोज मशीन पर था, ये इंग्लिश लाइक कोड है, ये बाइनरी कोड नहीं है। तो फिर अभी ये कोड आप कंपाइल कोड दूसरे मशीन पर लेके आए और हर एक मशीन पर आपने क्या किया? एक वन टाइम इंस्टॉलेशन किया। क्या है सॉफ्टवेयर का नाम? JRE। क्या सॉफ्टवेयर का नाम है?
JRE, आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जिसका नाम है JRE। अब ये JRE का सॉफ्टवेयर का काम क्या है? लेट्स से विंडोज मशीन पर JRE इंस्टॉल किया तो JRE विंडोज मशीन को समझने वाला बाइनरी कोड जनरेट करेगा। अगर JRE सॉफ्टवेयर मैक मशीन पर इंस्टॉल्ड है, इट इज गोइंग टू जनरेट binary code which is understood by Mac machine. If the JRE software is installed on Linux machine, it will generate binary code which is understood by Linux machine. If the JRE software is installed on Solaris machine, it will generate the binary code which is understood by Solaris machine. तो ये चारों के चारों बाइनरी कोड अलग अलग है। तो JRE भी आपका अलग अलग है और बाइनरी कोड भी अलग अलग है। विंडोज के लिए अलग JRE सॉफ्टवेयर होगा, मैक के लिए अलग JRE सॉफ्टवेयर होगा, लिनक्स के लिए अलग JRE सॉफ्टवेयर होगा और सोलारिस के लिए भी अलग सॉफ्टवेयर होगा। विल हैव डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर फॉर डिफरेंट डिफरेंट मशीन। अभी देखो यहाँ पर आपने एक अचीव किया, you write the code once and you run that code on any machine provided you have JRE। JRE के बिना आप जावा प्रोग्राम रन नहीं कर सकते। अगर आप जावा प्रोग्राम रन करना चाहते हो तो व्हाट इज द प्रीरिक्विजिट ऑन दैट मशीन? व्हाट यू शुड हैव JRE। JRE क्या करता है? जो भी डॉट क्लास फाइल है उसे रीड करके जनरेट करता है बाइनरी कोड विच इज अंडरस्टूड बाय दैट पर्टिकुलर अंडरलाइन। क्लियर है? सो हाउ जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? कैन यू टेल मी नाउ वंस अगेन? देखो यहाँ पर फिर से एक बार, you write the program in .java file. Now that file is given to the input to the Java compiler. Now Java compiler will generate a file called as .class file. Now that is English code. Is English code. इसे बोला जाता है क्या? बाइट कोड भी बोला जाता है, इसे मैजिक कोड भी बोला जाता है। और याद रखना इस पर्टिकुलर फाइल में क्या नहीं होगा? बाइनरी कोड नहीं होगा। Binary code will not be there. Now what do you do next? Now this is on one machine. On one machine. अभी आप क्या करते हो दूसरे मशीन में? अभी लेट्स से विंडोज मशीन है, योर विंडोज मशीन। सो वी हैव मल्टीपल अदर मशीन्स। हर एक मशीन पर आपको कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा? यू हैव टू टेक दिस पर्टिकुलर कोड, टेक दिस ऑन दिस पर्टिकुलर मशीन। यहाँ पर आपको होना चाहिए सॉफ्टवेयर जिसका नाम है JRE। ये JRE करेगा जनरेट जीरोज एंड these JREs। Now we are able to, now your code, your compile code, whether it is dependent on any other machine? No. Now this is Windows machine, this is Mac machine. As a developer, do you need to worry about any platform? As a developer, we do not need to worry about any platform, but सारे प्लेटफॉर्म पर कोई भी मशीन हो दुनिया का, तो वहाँ पर क्या इंस्टॉल होना चाहिए? JRE सॉफ्टवेयर। तभी आप जावा प्रोग्राम रन कर पाओगे। Then only you will be able to run the Java program, right? Now I want to write that note. How do I write that? Java program compiled on one machine can be run on any other machine provided that target machine has JRE installed. How does Java works? How does Java works? Java source code is compiled with Java compiler, and Java compiler generates the compiled code, which is nothing but which contains
English like code, English like intermediate code, which contains English like intermediate code. Then Java compile code, that is dot class file, that bytecode is given to the JRE software, and then JRE generates the binary code, which is understood by underlying platform. So you can tell this only one line. If someone is asking you Java, how Java is platform independent, so you can say Java program compiled on one machine can be run on any other machine provided that that target machine has a JRE installed. So that is a simple answer you can give. How Java is platform independent, you can tell them that Java program compiled on one machine can be run on any other machine provided that target machine has JRE installed. That's it. Any query on this? Online? Okay. I will check your understanding